Assalamu alaikum. Alright, so I'm going to discuss optical isomerism, right? This topic has few learning outcomes which are new for the syllabus, so that's why I'm going to discuss this topic today. Basically, most of the things आपने पहले से पढ़ रखी हैं AS के अंदर. What is optical isomerism, कैसे ड्रॉ करने हैं, 3-dimensional diagrams कैसे बनेंगी. So most of the things, the basic concept आपको पहले से मालूम है, you already know it. Right, now what we have to do, we are just going to discuss the learning outcomes, right, and we will discuss few examples of those as well. Okay, so let's just start with the learning outcomes. So the first learning outcome of this topic is understand that enantiomers, that they are talking about optical isomerism, right? So they're saying that understand, basically they have introduced few new terms in the topic. For example, enantiomers, इसी तरीके से Rasmic mixture. ठीक है, तो ये कुछ नई टर्म्स हैं आपके लिए, बट ये बिल्कुल सिंपल है. सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स बाय द टाइम वी एंड दिस टॉपिक, राइट? So the first learning outcome is understand that enantiomers have identical physical and chemical properties. So we will discuss what are enantiomers, apart from their ability to rotate plane polarized light and their potential biological activity. Right, so before discussing what are enantiomers, let's first discuss what is optical isomerism. So basically you all know what is optical isomerism. ये आप सब ने AS में पढ़ा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए. ठीक है, so optical isomerism is basically it is a type of stereoisomerism. We know this thing कि जी isomerism जो है वो दो टाइप का है, structural isomerism, stereoisomerism. Structural isomerism की types अलग थी. Stereoisomers, they are basically either they are geometrical or optical isomers. So we are talking about optical isomers. So optical isomers क्या होते हैं? So molecules have same structural and molecular formula. ऐसे compound जिनके molecular formula same हो, structural formula same हो, but they are non-superimposable mirror images of each other. So what is the difference between optical isomers? That they have same molecular formula, their structural formula is same, but they are non-superimposable mirror images of each other, that they cannot be, their mirror images cannot be superimposed over each other, right? And one of the major attribute of a compound which shows optical isomerism is that it must have a chiral center or a chiral carbon. ठीक है, किसी भी ऑप्टिकली या आप कह लेंगे कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सो इट मस्ट हैव अ chiral center, it must have a chiral carbon. What is a chiral carbon? A carbon which is attached to 4 different groups. कोई भी ऐसा कार्बन जो 4 different groups से attached हो, that is called a chiral carbon. So it is not necessary कि जो आपका optically active compound है या जो optical isomerism show कर रहा है, it only have one chiral carbon. It can have more than one chiral carbons as well, right? But we are only discussing compounds with one chiral carbon, right? Okay, so let's just take an example of a optically active or a compound which shows optical isomerism. We have 2-aminopropanoic acid. So 2-aminopropanoic acid, this is 2-aminopropanoic acid, 3 carbon atoms. We have this COOH group and amine on second carbon. So this 2-aminopropanoic acid is this carbon. This carbon is a chiral carbon because it is attached to 4 different groups: COOH, NH2, CH3 and H. So these are 4 different groups. So that means this carbon is a chiral carbon, right? And if it is a chiral carbon, that means it will show optical isomerism. That means I can draw 2 non-superimposable mirror images for 2-aminopropanoic acid in 3D form. तो आप सब ने जो है बेसिकली 3D स्ट्रक्चर्स AS लेवल में पढ़े हैं, तो यू नो कि जी हाउ टू ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर. तो ये आपके पास 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं. जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन दिस शोज अ बॉन्ड विच इज़ गोइंग अवे फ्रॉम अस. ठीक है जी. वेज शोज अ बॉन्ड कमिंग टूवर्ड्स अस, एंड जो आपकी सॉलिड लाइन है, दिस मीन्स दिस इज द बॉन्ड इज ऑन द प्लेन ऑफ पेपर. Alright, so this is the 3-dimensional diagram. If we talk about this first diagram, so a carbon atom in the center, and we have COOH group, H on the same plane, CH3 going away from us and NH3 coming towards us. So this is one representation, or this is one optical isomer, and a mirror image of this optical isomer is that we will switch the COOH and CH3 left and right bond. So now COOH is on the left side and CH3 is on the right side. And if I try to superimpose one of this isomer on the other one, let's suppose
I try to superimpose this one on this other structure, so you can see that this cannot be superimposed. ठीक है जी, so this cannot be superimposed because आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे COOH है, this bond is going away from us, this is on the plane. So these two structures cannot be superimposed, and because they cannot be superimposed, that means that they are optical isomers of each other, right? They are optical isomers, they are non-superimposable mirror images. And if a compound has two non-superimposable mirror images, these two non-superimposable mirror images, they are also known as, we use one more term for these non-superimposable mirror images, they are also known as enantiomers. These are called enantiomers. What are enantiomers? Two non-superimposable mirror images. ठीक है जी, कोई भी दो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो हैं, दे आर नोन एज enantiomers. दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो enantiomers. दैट मीन्स these two optical isomers, these are optical isomers, right? These are optical isomers and we can use the term enantiomers for them. So आपको ये term जो है वो clear मालूम होनी चाहिए कि what are enantiomers? Enantiomers are non-superimposable mirror images, right? So these are two non-superimposable mirror images. All right. So basically जो पहला आपके पास learning outcome था कि understand that enantiomers have identical physical and chemical properties apart from their ability to rotate the plane polarized light and their potential biological activity. तो हमने enantiomers की तो बात कर ली कि enantiomers क्या होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिकली ये जो enantiomers हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर आइडेंटिकल. मींस ये जो आपने दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाए हैं अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड के, इनके मेल्टिंग पॉइंट सेम होंगे, दे वुड हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, दे विल रिएक्ट इन अ सिमिलर मैनर. सो दे हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, राइट. बट द डिफरेंस where they differ from each other, they differ in their ability to rotate the plane polarized light. They rotate the plane polarized light in opposite directions. ठीक है जी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि they rotate the light in opposite direction. So they rotate the light in opposite direction. For example, an unpolarized light is in which vibration occurs in all planes. So you can see that this is we are showing this unpolarized light in which particles are vibrating in all different planes. And when this unpolarized light, when it passes through a polarizer, this is a polarizer, right? This is a polarizer. And what is a polarizer? It is sort of a filter which lets light of a specific polarization passes through. ठीक है जी, तो ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पोलराइजेशन को पास होने देगा. ये एक तरह से आप कह लें कि ये स्लेट का काम करता है, एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन इसमें से पास होगी, बाकी सबको ये ब्लॉक कर देगा. सो लेट्स सपोज कि ये जो पोलराइजर है, इट ओनली अलाउज दिस vibration to pass through. So now this is a polarized light. Why it is a polarized light? Because vibration occurs in a single plane. All the vibrations are occurring in a single plane, so that's why it is a polarized light. ठीक है जी, ये polarized light है. And optical isomers, they have this ability that they rotate the plane polarized light in opposite direction. When this polarized light, it passes through some optically active compound. ठीक है जी, जब आप इसको किसी इस पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से पास करेंगे, तो दैट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल रोटेट दिस लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, एंड दीज टू आइसोमर्स दे हैव दिस एबिलिटी, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वन ऑफ देम रोटेट द लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हम आगे चल के भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, द अदर वन विल रोटेट द लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So this is the major difference between these two enantiomers or optically active compounds, कि ये light को, that's why we call them optical isomers. This is the major reason why we call them optical isomers, because they rotate the polarized light in opposite directions. ठीक है जी, so I hope यहाँ तक बात clear हो गई होगी. ठीक है, अच्छा, next the other difference between these two optical isomers is their biological activity. Like we say that although their physical and chemical properties of these isomers are similar,
they show marked difference in their biological activity. One of the differences that they rotate the light in opposite direction, and the other major difference is that they show marked difference in their biological activity, right? For example, these optical isomers, most of these optical isomers, they're used as drugs, as medicines. They show a huge difference in their biological activity. So basically किस तरह से ये differ करेंगे biological activity के अंदर, ये आप यहाँ से इस example से समझ सकते हैं कि biological systems, they can recognize the two enantiomers as two different, very different substances. राइट हमारे लिए, हमें देखने में ये दो स्ट्रक्चर्स एक जैसे लग रहे हैं, बट नॉर्मली जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो एंजाइम्स हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करना है, ठीक है, दे आर वेरी स्टीरियो सेलेक्टिव. दे कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई कि किसके साथ डील कर रहे हैं. आइदर दे आर डीलिंग विद द आइसोमर विच रोटेट द लाइट इन क्लॉकवाइज, और दे आर डीलिंग विद द आइसोमर विच रोटेट द लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जो एंजाइम्स हैं या जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, दे कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई that with which isomer they are dealing with. For example, यहाँ पे ये एक simple example है. So basically you can see that we have these two different examples. This is the active enantiomer. This is the active enantiomer and this is the inactive enantiomer. ठीक है. So the major difference is you can see that A and C. In the inactive enantiomer, A is on the right side and C is on the left side. So this is the drug binding site. Let's suppose this is some sort of enzyme, right? This is some sort of enzyme. This is the drug binding site, and you can see that this active enantiomer, this can easily fit into this drug binding site, as A is complementary to this side, B is complementary to B, and C is complementary to C. So that means this active enantiomer, this can easily bind to this drug binding site. But this inactive enantiomer, its groups are not complementary to the drug binding sites, as where it has C, where the inactive enantiomer has C, the drug binding site has A. So this inactive enantiomer, the inactive enantiomer, it cannot bind with this drug binding site. ठीक है जी. और आप इसको कितना भी रोटेट कर लें, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी रोटेट दिस आइसोमर, ए यहाँ पे चला जाए, डी यहाँ पे आ जाए और सी इधर चला जाए, तो अगर आप इसको रोटेट भी कर दें, स्टिल इट कैन नॉट बाइंड टू द ड्रग बाइंडिंग साइट. सो दैट मीन्स कि ये जो आपकी ड्रग बाइंडिंग साइट है, इट इज़ हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव. whatever it is, if it is an enzyme, we can say that this drug binding site, this is highly stereo selective. And what is meant by highly stereo selective, or what is meant by stereo selectivity? It is highly stereo selective. What is meant by stereo selectivity? That this drug binding site can only react with one of the isomer, either clockwise or anti-clockwise isomer, but it cannot react with both, because with one of the enantiomer, its sites will not match. It would not be complementary to that particular enantiomer, and that's why it cannot react with that particular enantiomer. But the one which is active, it can easily bind to the drug binding site and it will react. So that's why we are saying that they show marked difference in their biological activity. One of the enantiomer will bind to the drug binding site, the other one cannot bind, क्योंकि उसका जो आप कहने के जो उसके ग्रुप्स की अटैचमेंट है वो ड्रग बाइंडिंग साइट के साथ मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से अटैच नहीं हो सकता. ठीक है जी. सो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में. देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, their chemical properties are same, but they show marked difference in their biological activity, and they show difference in their optical activity. They rotate the light in opposite directions. ठीक है जी. सो ये पहला जो आपका लर्निंग आउटकम था वो हमने क्लियर कर लिया कि the enantiomers have identical physical and chemical properties apart from their ability to rotate plane polarized light and their potential biological activity. Now the second point is understand and use the term optically active. Optically active means which rotate the light, right? When optically active means कि substance which can rotate the polarized light, जो polarized light को rotate कर सके. तो basically जो optical isomers हैं, they are all optically active. So I don't think इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत रह गई है. We have already studied it. And then use the term Rasmic mixture. Now Rasmic mixtures basically क्या होते हैं? Let's just discuss Rasmic mixtures. Rasmic mixture is
a mixture of optical isomers in which both the isomers are present in 1:1 ratio. Means if we have a mixture in which both the isomers, the one which rotate the light in clockwise direction and the one which rotate the light in anti-clockwise direction, if we have both of them present in a 1:1 ratio, then it is called a Rasmic mixture, and these mixtures are optically inactive because दोनों आइसोमर्स मौजूद हैं, जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. सो इफ वन ऑफ देम रोटेट द लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द अदर वन विल कैंसिल इट आउट. एंड क्योंकि दोनों 1:1 के रेशो में हैं, दोनों 50% हैं, सो दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट करेंगे, एंड दैट इज़ वाई दीज रैस्मिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये लाइट को रोटेट नहीं करते. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू मस्ट नो व्हाट आर रैस्मिक मिक्सचर्स एंड यू मस्ट नो दैट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये लाइट को रोटेट नहीं करते. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग आउटकम आ जाता है. डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस. सो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स का इफेक्ट हमने डिस्कस करना है. इफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स दे रोटेट द लाइट in opposite directions. So basically this is very simple point. Enantiomers rotate the plane polarized light in opposite directions. ठीक है, दोनों जो आपके enantiomers हैं ये लाइट को opposite directions में रोटेट करते हैं. ठीक है, the enantiomer that rotate the light, or you can say that enantiomer that rotate the plane clockwise is called R plus और D. ये different representations हैं. ठीक है जी. So वो enantiomer that optically active compound or that isomer which rotate the plane clockwise, we call it either R or plus or D. And the enantiomer that rotate the plane anti-clockwise, this is called S or minus or L. ठीक है जी. So clockwise अगर rotate कर रहा है तो R plus और D, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है देन इट इज़ नोन एज एस माइनस और एल. सो अगेन वी हैव दिस पिक्चर एंड दिस इज टेकन फ्रॉम सेव माई एग्जाम्स. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट हियर वी हैव दिस अनपोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू अ पोलराइजर एंड वी गेट आवर पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, अब जो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वी हैव दिस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड in which this carbon is optically active. This carbon is chiral center and it is attached to 4 different groups, Br, F, Cl and H. तो 4 different groups के साथ attached है. ठीक है, and if it is rotating the light, now if you can see basically it is rotating the light in anti-clockwise direction, right, in anti-clockwise direction. So because it rotates the light in anti-clockwise direction, that means it is S isomer. राइट, देयर इज़ अनदर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग. बेसिकली ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाज़ इसके कुछ क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई इफ़ इट इज़ एन आर और एस ज्योमेट्री. हर जगह पे आपको ये एरो गिवन नहीं होगा. ठीक है, तो अगर एरो नहीं है और आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिकली आप सिंपल क्या देखेंगे कि आपके पास जो कायरल सेंटर है इसके साथ जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आपने ये देखना है कि दिस कायरल सेंटर इज अटैच टू विच 4 ग्रुप्स. ठीक है, इनमें से वो एटम जिसका प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर सबसे हाई है उसको आप प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे. सो लेट सपोज यहाँ पे Br का एटॉमिक नंबर सबसे हाई है तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1. दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी जाएगी Cl को, तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी जाएगी फ्लोरीन को और चौथे नंबर पे प्रायोरिटी जाएगी हाइड्रोजन को. ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. आपने जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या करना है टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ एन आर और एस, वेदर इट इज़ एन आर और एस. पहली चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका फोर्थ जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, इफ़ इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू और नॉट. सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, इज़ इट गोइंग अवे फ्रॉम यू और नॉट. सो हेयर द हाइड्रोजन इज़ नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू. हाइड्रोजन जो है ये वेज के साथ है तो दैट मीन्स इट इज़ कमिंग टूवर्ड अस. ठीक है, सो इट इज़ नॉट गोइंग अवे. तो अगर ये गोइंग अवे होता तो यहाँ बड़ा सिंपल काम था, आसान काम था ज्योमेट्री बताना, बट अगर नहीं है, ठीक है, तो अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल 1 से 3 की तरफ जाना है. ठीक है, 1 से 3 की तरफ, डायरेक्टली नहीं, 2 से होते हुए 1 से 3 की तरफ जाना है. ठीक है, सो व्हाट वी वुड सिंपली डू,
वी वुड रोटेट, लाइक वी कैन से दैट 1 से 3 की तरफ आपने जाना है बाय पासिंग थ्रू 2, सो दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन. नाउ दिस इज क्लॉकवाइज, राइट. जो एरो की डायरेक्शन बता रही है दिस इज क्लॉकवाइज. ठीक है. अब अगर आपका हाइड्रोजन जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी था, इफ इट वाज गोइंग अवे फ्रॉम यू, तो जो भी डायरेक्शन आई है आप इसको वही नाम देते. फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉकवाइज आई है और हाइड्रोजन गोइंग अवे होता, तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर, तो आप इसको आर नाम देते. बट अगर हाइड्रोजन गोइंग अवे नहीं है, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर पे है, वेज पे है, तो जो भी डायरेक्शन आपके पास आ रही है आप उसको ऑपोजिट लेंगे. लाइक क्लॉकवाइज आ रही है तो आप इसका मतलब उसका ऑपोजिट लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज. एंड एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस, सो इट इज़ एन एस ज्योमेट्री. ठीक है. इसी तरीके से आप इसको ज़रा क्लियर करें. नीचे वाली एग्जांपल में देखते हैं. लेट सपोज यहाँ पे भी अगेन हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लोरीन 1, सॉरी ब्रोमीन 1 2 3. अगेन हाइड्रोजन जो है ये डॉटेड लाइन पे नहीं है, अवे फ्रॉम अस नहीं है. आपने सिंपल 1 से 3 की तरफ जाना है पासिंग थ्रू 2, तो ये आपके पास डायरेक्शन बनेगी. और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, बट बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट गोइंग अवे, सो वी वुड टेक ऑपोजिट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, विच वुड बी clockwise, and that means it is an R geometry. So this is a very easy way of finding out whether we have a clockwise, whether we have an S geometry or an R geometry. ठीक है, R isomer और S isomer. So ये आपके पहले जो 4 आप कह लें कि लर्निंग आउटकम्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए. ठीक है. द इफेक्ट ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस. ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, इन विच वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ chiral compounds. So this is the last learning outcome of this topic. Now they're saying that explain the relevance of chirality to the synthetic preparation of drug molecules, including the potential different biological activity of the two enantiomers. दोनों enantiomers का biologically क्या रोल होगा उसको डिस्कस करना है. The need to separate a Rasmic mixture into two pure enantiomers. Why we have to separate the two enantiomers, right? And the use of chiral catalysis to produce a single pure optical isomer. All right, so basically अगर हम chiral compounds की बात करें कि different chiral compounds कौन कौन से हो सकते हैं, कि medicines और drugs, they are optically active, they are chiral compounds. Sugars or carbohydrates, they are chiral compounds. Amino acid, except for glycine, all the alpha amino acids are optically active. So except for glycine. ठीक है जी. DNA and enzymes. So these are few chiral compounds जो कि आप कह सकते हैं कि which are used in medicines. Alright, so अब next हमने बात करनी है drug synthesis की. ठीक है जी. अच्छा, बेसिकली ड्रग सिंथेसिस जो है, क्योंकि ड्रग्स जो हैं दे आर मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, तो कोई भी आपके पास कह लें कि किसी भी किस्म के जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं, इनके आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो मिलेंगे. ठीक है. एंड ड्रग सिंथेसिस में जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, यूज़ ऑफ कन्वेंशनल ऑर्गेनिक रिएक्शंस टू मेक अ ड्रग विल यील्ड रेस्मिक मिक्सचर. ठीक है जी. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि व्हेनेवर वी मेक ड्रग्स थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स वी गेट रेस्मिक मिक्सचर. यानी कि बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो ड्रग सिंथेसिस है इट ऑलवेज यील्ड रेस्मिक मिक्सचर. वी गेट 2 कंपाउंड्स. ठीक है. ईच ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स टू ईच अदर. ठीक है जी. अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि दीज रेस्मिक मिक्सचर्स दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट दे डिफर इन देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी. मोस्ट ऑफ द टाइम इसके फिर साइड इफेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं. फॉर एग्जांपल, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सपोज दिस थैलिडोमाइड. थैलिडोमाइड इज बेसिकली यूज्ड एज एन इफेक्टिव सेडेटिव. ठीक है जी. दिस S-thalidomide. This S-thalidomide is used as an effective sedative which has a soothing effect. It releases anxiety, and makes the patient drowsy.
Mostly this medicine is used by pregnant women. ठीक है जी. And R thalidomide, S thalidomide जो है, this is used for this purpose. And R thalidomide on the other hand, because this is the optical isomer of S thalidomide, this causes major birth defects. Due to this R thalidomide, it causes major birth defects. So where one of the isomer is being used as a medicine, the other isomer causing side effects, ठीक है जी, causing major side effects, due to which we cannot use the Rasmic mixture. So this is one major reason why we cannot use, or why Rasmic mixtures must be avoided in drug synthesis. Another example is ibuprofen, which is used as painkiller. So S-ibuprofen is used as a painkiller, but R-ibuprofen is totally inactive, right? So this R-ibuprofen is inactive, and this S-ibuprofen, this is used as painkiller. तो सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है कि वन ऑफ द आइसोमर इन अ रेस्मिक मिक्सचर, ओनली वन आइसोमर विल एक्ट एज अ मेडिसिन, एज ड्रग. द अदर आइसोमर विल आइदर कॉज साइड इफेक्ट और इट रिमेन्स इनएक्टिव. Another very common example is naproxen, which is used for arthritis pain. We can say the optical isomer of naproxen, this is used for arthritis pain, but the other optical isomer of naproxen, this causes liver damage. So these are few examples in which we were using Rasmic mixtures, but they causes major problems, side effects, due to which now we are shifting towards stereoselective synthesis. कि जी एक ही जो मतलब आप कह लेंगे जिस जो आइसोमर रिक्वायर्ड है, ओनली दैट आइसोमर कैन बी प्रिपेयर्ड इन मेजर क्वांटिटी. ठीक है जी. तो ये Rasmic मिक्सचर्स जो हैं जिसमें 50-50 का रेशो बन रहा होता है, इनको जो है वो अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है. तो बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ Rasmic मिक्सचर्स हैं, इसके एडवांटेज क्या है. सेपरेशन, अक्सर इस पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपके पास पेपर में, कि द एडवांटेज ऑफ सेपरेटिंग द Rasmic मिक्सचर्स. सो इट विल रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स इन द पेशेंट्स. ठीक है जी. तो जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं. इट डिक्रीजेस द पेशेंट डोजेज बाय हाफ, बिकॉज एक जो आपके पास आइसोमर है वो इनएक्टिव है, उसका कोई काम नहीं है. तो अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो पेशेंट का डोज है वो हाफ हो जाएगा, एज प्योर एनांशोमर इज़ मोर पोटेंट. ठीक है जी. सो ये दो मेजर एडवांटेजेस हैं. वन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे. सेकेंडली, डोजेज जो है वो हाफ पे आ जाएगा. तो ये हम कह सकते हैं कि दीज आर टू मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग Rasmic मिक्सचर्स. सो ये तो हमने यहाँ तक बात कर ली कि व्हाट इज़ अ Rasmic मिक्सचर, और Rasmic मिक्सचर्स के ड्रग सिंथेसिस में क्या डिसएडवांटेज आ सकते हैं. अच्छा जी, अब इसमें लास्ट में बात कर लेते हैं मेथड्स टू सिंथेसाइज प्योर एनांशोमर्स. हाउ टू सिंथेसाइज प्योर एनांशोमर्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस. ठीक है जी. स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस. अब इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं. नंबर वन इज ऑप्टिकल रेजोल्यूशन. नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल रेजोल्यूशन? ऑप्टिकल रेजोल्यूशन इज बेसिकली ये थोड़ा सा ज़रा आप कह लें कि लेंथी प्रोसेस है. इन ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंथेसिस ऑफ Rasmic mixture occurs. And then from that Rasmic mixture we separate the required enantiomer. So basically first we make the Rasmic mixture and then separation occurs. Like what happens is, let's suppose if we have this Rasmic mixture of any unknown optically active compound, let's suppose we have D and L. So D and L are optically active compound and they are isomers to each other. So let's suppose if we react these two molecules with another molecule which itself is optically active. Let's suppose if we react it with D dash, and D dash itself is optically active. D dash itself is optically active. Right, like so D dash itself is optically active. It has a chiral center. Either it rotates the light in clockwise direction or it rotates the light in anti-clockwise direction. So what happens is that this D dash will react with both D and L. We are not going to discuss any real example.
जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है. सो व्हाट हैपेंस इज कि डी और एल को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल था. डी एंड एल कैन आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट बिकॉज ये रेस्मिक मिक्सचर है, इन एंशोमर्स हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. सो व्हाट वी डू, वी सिंपली रिएक्ट देम विद डी डैश. नाउ व्हेन दे रिएक्ट विद डी डैश दे फॉर्म, लेट्स से व्हेन D reacts with D dash, this forms DD dash and LD dash. Now these two compounds, they are not enantiomers. Now they are not enantiomers. So they can be separated by fractional crystallization. Fractional crystallization. Basically separational technique है in which we use a particular solvent and these two components, they would have different solubilities, right? These two would have different solubilities in that solvent and based on their solubility we can separate them. मीन्स के आपको फ्रैक्शंस में क्रिस्टल्स मिलेंगे. पहले लेट सपोज इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे, फिर इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे. जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसके क्रिस्टल्स देर से मिलेंगे. तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इन विच सेपरेशन अकर्स बेस्ड ऑन solubility. ठीक है जी. देन वंस वी हैव सेपरेटेड देम, फिर उसके बाद आपने लेट सपोज वी नीड डी. ठीक है जी. सो देन दिस डी डी डैश, दिस वुड बी अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट. तो इसको आप हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. कैन बी सेपरेटेड बाय hydrolysis. So this is the this is called known as optical resolution. अच्छा, इसमें जो आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यूज़ किया है, दिस डी डैश, दिस इज ऑल्सो नोन एज chiral auxiliary. This is also known as chiral auxiliary. ठीक है जी. सो ये ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मेथड कहलाता है, जिसमें आपने पहले एक सब्सटेंस जो है वो पहले रेस्मिक मिक्सचर बनाया, देन फिर रेस्मिक मिक्सचर में से आप डिज़ायर्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. नाउ इस मेथड के डिसएडवांटेजेस है. फॉर एग्जांपल इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मेथड, सेपरेशन है काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी, टाइम कंज्यूमिंग है. पहले रेस्मिक मिक्सचर बनेगा, फिर उसको सेपरेट करेंगे, यूजेस एक्स्ट्रा रिएजेंट, आपको ये कायरल ऑक्सिलरी जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे. वेस्ट ऑफ हाफ दी ओरिजिनल रेस्मिक मिक्सचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्मिक मिक्सचर में 50% दूसरा आइसोमर होना है, तो दैट वुड बी वेस्टेड. ठीक है जी. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल रेजोल्यूशन. नाउ ऑप्टिकल रेजोल्यूशन कैन ऑल्सो बी हैपन इन अनदर वे. दिस इज chemical process through which we are doing optical resolution. Optical resolution can also happen through high performance liquid chromatography. ठीक है जी. आप क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी सेपरेशन कर सकते हैं. बेसिकली एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें आपके पास कॉलम में कोई भी स्टेशनरी फेस जो है वो फिल्ड होगा. लेट्स सपोज ये कॉलम है और इसमें स्टेशनरी फेस जो है वो फिल्ड होता है. लेट्स से दिस इज सम स्टेशनरी फेस. नाउ दैट स्टेशनरी फेस मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल. दिस स्टेशनरी फेस, दिस इज सम स्टेशनरी फेस which must be optically active itself. So what happens is कि when we pass our Rasmic mixture D and D dash from this stationary phase, one of these two isomers would develop strong connections with this stationary phase, and due to which it travels slowly. Let's suppose this develop strong connection with stationary phase, due to which it travels slowly, and D dash would travel at a faster rate. So इस तरह से भी आप सेपरेशन कर सकते हैं. So this is high pressure, high performance liquid chromatography, also known as HPLC. So through this way we can also do optical resolution. So ये भी optical resolution में आ जाता है. ठीक है जी. अच्छा जी. नेक्स्ट इज कायरल पूल सिंथेसिस. सो वी आर डिस्कसिंग बेसिकली स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस, और स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस में कायरल पूल सिंथेसिस इज द ओल्डेस्ट मेथड. दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस. इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप कोई भी
ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में से, ठीक है, और उस पर रिएक्शंस करते हैं। मतलब आपने कोई भी एक पर्टिकुलर आइदर डी और एल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से कोई एक जो है वो एक्सट्रैक्ट किया और उसके ऊपर रिएक्शंस होते हैं, तो जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होती है वो भी सेम ज्योमेट्री के अंदर ही बनती है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमाइनो एसिड्स में कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, इसमें NH2 जो है वो इस यहाँ पे अटैच है वेज पे, देन लेट्स से दिस इज COOH H and CH3। सो दिस इज सम नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड एंड आपने इस अमाइनो एसिड को एक्सट्रैक्ट किया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में से, और फिर इस पे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस NH2 ग्रुप वुड बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर न्यूक्लियोफाइल, तो वो सेम इसी को आके रिप्लेस करेगा, इसी सेम ज्योमेट्री के अंदर जो है वो कंपाउंड बनेगा। तो जो डिज़ायर्ड कंपाउंड होगा वो भी सेम इसी सेम ज्योमेट्री के अंदर बनेगा, तो वी गेट आवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। सो ऑब्वियसली ये काफ़ी आसान मेथड है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो कि ये कायरल पूल है ये कोई इतना लार्ज नहीं है। मोस्टली दे आर आइदर कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स विच वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कायरल पूल सिंथेसिस क्या हो गया? यूज ऑफ स्टार्टिंग मटीरियल that are themselves optically active. For example, carbohydrates and amino acids, they are optically active. Now, होता क्या है कि they result in an enantiomer of same formation. ठीक है जी, no need of separation, यहाँ पे किसी separation की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको जो required isomer होता है वो मिल जाते हैं। बट ये काफ़ी मतलब आप कह लें कि लिमिटेड ऐसे कंपाउंड है जो इससे बन सकते हैं, ठीक है जी। एंड फाइनली वी हैव chiral catalysis. Now basically chiral catalysis is in which we use some a catalyst which itself is optically active, and that catalyst will make sure कि आपको जो desired isomer है वही मिले, ठीक है। तो for example catalyst, what is chiral catalysis? A catalyst that enables the formation of an enantiomer is used. यानी आप कोई ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो एक पर्टिकुलर आइसोमर जो है वो उसकी फॉर्मेशन को जो है वो इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन। सो ये जो मतलब इसका आप कहने के एडवांटेज क्या है कि दीज कैटलिस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड दे कैन बी रीयूज्ड, बार बार आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो सबसे बेहतर एग्जांपल है दैट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर एक्सीलेंट बायोलॉजिकल कायरल कैटलिस्ट एंड दे प्रमोट स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है जी। सो एंजाइम्स जो हैं दे आर परफेक्ट कायरल कैटलिस्ट। तो कायरल कैटलाइसिस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उसमें ये है कि आपने जो भी ऑप्टिकली एक्टिव आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे दैट वुड यील्ड वन पर्टिकुलर आइसोमर, दूसरा नहीं बनेगा। जैसे हमने पहली एग्जांपल डिस्कस की थी, दिस एग्जांपल, ठीक है जी। इन दिस एग्जांपल हमने बात की थी कि बेसिकली ये समझने के दिस इज अ, सो लेट्स से इफ वी से दैट दिस इज द कायरल कैटलिस्ट, सो दिस कैन ओनली बाइंड विद वन पर्टिकुलर आइसोमर, और एक ही एनेंटियोमर जो है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। जो इस ज्योमेट्री को मीट करेगा वही जो है वो यहाँ से बन सकता है। सो बेसिकली कायरल कैटलाइज जो है दिस विल ओनली यील्ड वन पर्टिकुलर आइसोमर, एंड इसकी सबसे परफेक्ट एग्जांपल है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर एक्सीलेंट बायोलॉजिकल कायरल कैटलिस्ट दैट प्रोमोट स्टीरियो सेलेक्टिविटी। नाउ प्रॉब्लम इज कि अगर आप प्योर एंजाइम्स यूज़ करते हैं, दोज एंजाइम्स विच आर बीइंग यूज्ड इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इट इज़ एक्सपेंसिव टू आइसोलेट एंजाइम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किसी भी नेचुरली अकरिंग एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करना फिर उसको यूज़ करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। देयरफॉर सिंथेटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस। तो अब क्या है कि आप सिंथेटिक एंजाइम्स जो है वो बना रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये भी जो है वो इतना आसान नहीं होता। तो मेनली कायरल कैटलाइसिस और ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, ये दोनों मेथड कंबाइन होकर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट इसमें ये पॉइंट ध्यान में रख लें कि यूजिंग एंजाइम्स इट टेक्स लॉन्गर, कि आपने एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करना है देन फिर उसको यूज़ करना है, तो इट टेक्स लॉन्गर, बट इट इज़ मोर ग्रीनर प्रोसेस, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है बिकॉज फ्यूअर स्टेप्स आर इन्वॉल्व। बाकी में प्रोसेस में क्या होता है ऑप्टिकल रेजोल्यूशन में कि आपने पहले रेस्मिक मिक्सचर बनाया, फिर उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो जो बन रहा है उसमें से वेस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो है वो सबब बन रहा होता है। यहाँ पे क्या है कि फ्यू स्टेप्स हैं, डायरेक्ट जो रिक्वायर्ड है वही आपको कंपाउंड मिलेगा। सो दैट इज़ अ मोर ग्रीनर प्रोसेस यूज़ ऑफ एंजाइम्स फॉर द कायरल कैटलाइसिस। अच्छा जी बेटा, लास्ट में दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कायरल कैटलाइसिस। Basically this is a chiral compound,
This is an achiral compound, means it lacks chiral carbon. That means it is not optically active. This is not optically active. ठीक है जी. And once it reacts with this organometallic ruthenium catalyst, which is a chiral catalyst, it converts this into this compound, which is known as naproxen. So naproxen is optically active. It contains this carbon, which is optically active, right? So this naproxen is optically active, and this is an example of chiral catalysis, because through this reaction, by the use of this organometallic ruthenium catalyst, आपको सिर्फ यही catalyst isomer मिलेगा naproxen का, in which hydrogen is coming towards us, right? The other isomer will not form. So this is an example of chiral catalysis, in which a chiral catalyst will help us in forming one particular isomer. Alright, so this is the end of this topic. If you have any questions, you can ask in the comment section. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़.